hand it over to you. Over to you, Madhav Beta. Okay, okay, sir. Okay. Good morning, everyone. It's noon, by the way. I'm Madhav Mehta. I was in the very first batch of our college, and I've done my electronics engineering from this college. And I started my journey in the as soon as I got into this field. I am currently a manufacturer and plastic household products, and we manufacture around 150 to 2 and we are also manufacturers of stationery products. What I would say is from the very start of our college, there was this one thing in my mind which I was very clear about, that I'm not made for a job. I was very much interested in doing something on my own, be it anything. And, do it. So I decided that after completing my engineering, I would do something related to this. And finally, after completing my 4 years of engineering, and my exams got over on 4th June, and by 8th June, I was into this and I started planning. It's a tough road, but if you have your motivations very clear, if you have your path very clear, you can definitely succeed in every field, every way into a business. And the basic thing was that I had my motto very clear right from the start कि नहीं अपने को job नहीं करना है, we have to do something new, कुछ business में करना है, and I want to do something which inspires me, and that was the plan right from the start. So while I was in my second year of engineering, I started thinking about what my future plans are, because after 4 years तुम तब बैठो और डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, तो इट इज ऑलरेडी लेट इनटू दिस. सो बाय द सेकेंड ईयर आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, एंड आई डिसाइडेड के ये फील्ड में करना है कुछ, बिकॉज आई हैव नोन पीपल who have been this plastic industry. So I started looking up to it, and I started looking into it, what are the basic structural planning required for starting this business. And धीरे धीरे I started with some household products like you say hanger, wall hanger जो होते हैं, suit hanger, coat hanger, वैसे different products I started to manufacture, and I started touring all across India to market my product. And while touring, I realized that people are looking for new people who want to do business and are interested when you give them a good variety of product with good qualities. And I made this very clear that at the very start of my business, even if I earn less, my quality should be above par. And that was my basic motto. And from small part, I started manufacturing different products. And from past 3 years, I have my own 150 to 200 products, and also started manufacturing stationery products. Like pencil box, lunch box, pencil pouch, and various other products which are stationery related. And so far it has been good, and learning new things daily, that is what is required in business, and it is going good. So yeah, that's my story. Hello. Yes, Madhavan, go ahead, Madhavan. Okay. There was some issue with the mic, I guess. What I would like some student related to this. Might be having some doubts, and if they want to ask, then it would be good.
Yes, any of the student can speak out if you have any queries or any. It's an interactive session, so you can speak with him. All right, yes. Guys, whatever question you have regarding the startup thing, entrepreneur thing, just pitch it in. Sir, I have a doubt. Like, how did you came to know about this entrepreneurship, like in this plastic or stationery manufacturing, and how did you made the researches on that? Okay, this is a good question. When I was in my second year of engineering, I was planning, okay, I have to start something on my own and wanted to go into this business field. And so relatives, and I got few suggestions from them. I took few suggestions from them. But the most important thing which is required is to have yourself have that market analysis. So I went into different markets which sells this kind of products, the wholesalers and dealers, and I met with them. And I prepared a list that what products they require, what products are the most hot products, what we say, and from that, and what are their basic requirements and what rate accordingly, according to the raw materials and how the processing takes place. I went to different for the manufacturing thing. I went to different companies which are small cottage industries, and they very readily help you to understand various things into this market where this manufacturing thing. And from that I started my own manufacturing thing. Minimum investment of 10 to 15 lakhs which was required, and then for making different products I met different people from the market who are. Okay, my company's name is Shriji Plastic One, in which we have various household products. The second company name is Meena Plastic Industry, which has various stationery products. And third is Madhav Plastic Industry, which is a combination which has various kind of dinner sets and cutlery products. That is my company's name. Okay, my monthly turnover, I would say it's basically my yearly turnover is around 10 to 15 CR. Yeah, so monthly turnover it will be around 1 CR. Yeah. It takes a while. Okay, it takes a while. It has been now 6 years, 6.5 years into this business. Initially, it was less. Okay, I was earning around 10 to 15,000 a month because it was just the start of my business, and now it is going good. And now I'm kind of settled into this. Okay, I've got this question that where did I? Hello. Okay, I've got this question that where did I learn my business strategies? See, business strategies is basically very simple, that if you apply yourself, if you go into market and if you have that hands-on kind of an experience, dire you come into this business field and then you understand. There is no, like, there are people who do MBA and there is nothing wrong in doing it, but the real experience, that the real kind of strategies you develop only after you get into business. Only after getting into business, after around 1 year, I got different kind of strategies that how I have to apply myself to get good dividends from the my business, and how I have to make my products in such a way that people like it and I have good response. So basically, it doesn't come to you right from the start. Various strategies, it does not come to you right from the start. You have to have that kind of market experience. You have to have that kind of an exposure into the market where you can realize from time that as time passes, you see what kinds of lows and ups and downs come into this field, and then you realize what kind of strategies you have to apply. It should be dynamic. It shouldn't be static. Like, I cannot go into any kind of business with a fixed mindset, with a fixed strategy into it. Okay, now this is my steps. As the situation arises, there comes a different kind of reactions you have to put into it, and there comes different kind of strategies you need to apply it dynamically.
It is not like I learned something. I just had this kind of an vision that I have to do this kind of business. But the strategies is where I got my experience. I got an exposure to the market. Then I realized that this kind of strategies, various kind of strategies, I have to apply to make my business more powerful. Yeah. Okay, I've got this another question that how do I encourage my employees to work properly? Okay, so basically, it is like I have to find this kind of people where they are, I have to, it comes naturally. I mean, I cannot say this anything into this, but the thing is that you have to create a group of people around you which are focused, and you give them good pay. Definitely good pay helps a lot, but the main thing is, that is the only thing, that you have to give them a good pay. You have to give them platform. You have to give them that kind of vision that they are interested in your business. You have to give them that kind of कि भाई तुम लोग को भी इतना प्रॉफिट, तुम लोग को भी इतना ये मिलेगा उसमें, तुम लोग को क्या इसका फ्यूचर है. You have to show them the future of the company, and you have to find this kind of, like, if your company is small, then you have to find like 5 people right from the start, that these people are the one who are going to take me ahead. These people, basically मेरा काम है marketing करना, मेरा काम, I cannot be there everywhere, but the thing is, my employees are the ones which will gonna help me to progress. So I have to find that kind of people, and I have to motivate them further कि भाई तुम लोग को भी ये प्रॉफिट्स होएगा, जब कंपनी में प्रॉफिट्स होएगा या जो भी है, तो उसमें तुम लोग को भी क्या बेनिफिट मिलेगा. We have to show them that kind of vision कि ये तुम्हारा भी फ्यूचर हो सकता है. अगर कंपनी आगे बढ़ रहा है तो तुमको भी साथ साथ में मैं आगे बढ़ाऊंगा. So that is the thing. Okay, I have got this question that how do I handle negative people around me? So basically, the one thing is very clear, that if you have your kind of motivation, if you have a vision where you look yourself in the future, that where you want to stand, you have to avoid negative people completely. You can take people's advice, but which advice are good and which advice is bad, which is good for you, that you have to realize. You have to focus on that कि भाई मुझे क्या करना है, मेरा ये मुझे जो बोल रहे हैं नेगेटिव, मुझे मेरा विजन कितना क्लियर है, मेरा फोकस कितना क्लियर है, हाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई सेल्फ. दैट इज द वे यू कैन अवॉइड नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ. या एनी क्वेश्चंस? See, one more thing I remember, which I wanted to share with you, that whoever from the meeting right now, and anybody who wants to do business in future, who wants to look forward to starting their own something, you have to see future कि भाई मुझे, you have to take very small steps initially. So don't have that kind of vision कि यार मैं 5 साल में I have to be a billionaire, I have to be a millionaire. That is not the way to look into this. The only thing which you have to take in consideration is taking small steps. अगर तुम 1 महीना, सपोज फॉर एन एग्जांपल, एक महीने के स्टेप्स लोगे कि भाई मुझे 1 महीने में कितना मेरा प्रोग्रेस चाहिए, 1 महीने बाद मेरे क्या प्रोडक्ट्स मैं लॉन्च कर सकता हूँ, 1 महीने बाद मैं क्या डिफरेंट ला सकता हूँ मार्केट में, 1 महीने बाद मैं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. The target to complete that gets easier. The way to complete that, it gets easier. तो क्या होता है कि तब जब तुम लोग लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखते हो तो तुम लोग सक्सेसफुल होने के चांसेस घट जाते हैं. So it is better to take small steps, and it is better to take small goals into your 1 month, 3 month कि इतने में मुझे क्या क्या करना है. अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो इंटरेस्ट होता है आपका वो घट जाता है. सो इट इज बेसिकली यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स इनटू स्टार्टिंग योर ओन समथिंग, एंड सो इट हेल्प्स यू रियली वेल. एंड सो रिमेंबर दिस वन थिंग विच आई लर्नड पर्सनली. इनिशियली आई वाज आल्सो दिस कि यार 5 years में मुझे मेरी कंपनी पे यहाँ पे पहुंचाना है, 10 years में मैं यहाँ पे अपने आप को देख रहा हूँ, 15 years में यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ. इट इज गुड टू हैव दैट काइंड ऑफ ambition, but your goal should be in small steps. You have to realize कि जब तुम छोटे छोटे गोल्स रखेंगे तो तुम्हारे लिए वो
तुमको वो अचीव करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तुम छोटे छोटे गोल्स रखोगे तो तुमको भी अंदर से अपने लिए ये होगा कि नहीं, आई एम एबल टू डू इट। अगर तुम 10 साल में खुद को देख रहे हो आगे के, तो फिर तुम लोग 1 साल में तुम लोग क्या प्रॉफिट कर रहे हो, क्या तुम लोग कहाँ तक पहुंचे हो, वो तुमको रियलाइज नहीं होगा। एंड इंस्टेड छोटे छोटे गोल्स में रखेंगे अपना स्ट्रेटेजीज, अपने प्लानिंग, अपना एग्जीक्यूशन, then it will be easier for you to succeed. It will easier to motivate yourself, because nobody is in business, nobody will come to motivate you. It is you who have to realize what kind of vision you have. So basically take small steps. You have a big vision, big ambition, right, but the goal should be small and it should be step by step. So that is the something which I learned in my 7 years of business, and which I wanted to share you. Okay, I've got this one other question that I got this question that did my family support? See, initially there will be hesitations from your family, definitely, because you have been an engineer, electronics engineer, and you have topped your college for 4 years consecutively. So why not job? But since my family also comes from a business background, it was little easier to convince them. But definitely they also think, why after doing 4 years of engineering, you can apply yourself into engineering and get a good job into any company. So why? But the thing is, I showed them what kind of thing I want to do in life, what kind of visions I have. So initially there were a lot of hesitations, but sooner they realized that I'm so much focused into it, and they were seeing what kind of progress I would be making in this field. So initially after the hesitations, later they supported well. After 1 year around, they supported well, because I was showing them what kind of progress I'm making and what kind of vision I have for the future. So dhire gradually it helps you. Yeah. Sir, Yes. sir, as you said, like your company is earning 10 to 15 crores annually. Like, sir, is this a right time Yes. to launch your company's IPO? Like, See, the earning and turnover is a different thing. I didn't say I am earning 10 to 15 CR right now. It is my company's turnover, like how much amount of business I am doing. That is what I wanted to say. The thing is, IPO and all, it is right now, I don't think it is the right time for me, because I think there is lot of expansion which is required into my business. And currently I'm focusing on to being among the top 10 plastic household and stationery products manufacturer in our country. And when right now my vision is to get into that field, that zone, and after that I will be looking forward to what kind of future I'm looking into it. Like I want to launch an IPO or whatever. That is a long term thing right now. That is not, I'm not looking for that in next 10 to 15 years. Right now the focus is to make good money, to give quality products into the market, and make people dependent on you and your products, that their business runs because of me. That is what my vision is for right now. IPO and all that thing can come later. Okay, I have this question. What difficulties did you overcome in this field? There are various difficulties. Initially, I was very new into this and had no experience at all. So, manufacturing में machineries जो मैंने लिया था, उसमें नया difficulties. Daily, you have to come into different things. कुछ ना कुछ daily, जब तुम नए होते हो कोई भी फील्ड में, डेली तुमको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, एंड नया डिफिकल्टीज से ओवरकम होते हैं. इनिशियली इट वाज द प्रोडक्शन पार्ट, वेयर the most important thing was to give a good quality into the market. जो भी मेरे प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर करूंगा उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, वो ग्रेड मेंटेन करना, इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज आई वाज कीपिंग माय मार्जिन्स लो, प्रॉफिट मार्जिन्स वेरी लो, सो दैट आई कैन get into the market very easily. So it was a little difficult. Then the next part was marketing thing. I was launching products. Yeah, it was of good quality and it was the products which are hot selling products, and I was giving them good kind of discounts. I was giving them good kind of offers to get into the market. But
there are few people in the market that if you have very less amount of products, they don't take you seriously. So you have to prove them that how serious you are and how great amount of quantity, great amount of quality you can offer from your side. So that was a difficult part into marketing this, and that was initial phase. And धीरे धीरे ये सब जो कोविड का क्राइटेरिया को कोविड आ गया, फिर उसके पहले there was this demonetization thing, GST thing. So different kind of difficulties come daily into this business field, but it is like you have to overcome. So basically, if you want success, you have to overcome difficulties, and that was gradually it became like a part and parcel of life कि यार डेली कुछ ना कुछ नया आएगा एंड कुछ ना कुछ तुमको तुम्हारा स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके इसमें चेंजेस लाना है और तुमको आगे बढ़ना है. That was my plan. Okay, I've got this question that what kind of procedure is to manufacture the product? Okay, we manufacture household products, stationery products, and cutlery products, which are basically from a material known as polypropylene, that is plastic polypropylene product. And मशीन जो हम लोग यूज करते हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग है. तुम लोग ने फिजिक्स में स्टार्टिंग ईयर्स में पढ़ा रहेगा. तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी जो यूज होता है हमारा, एंड उसमें ही हमारा प्रोडक्ट्स जो ये पॉलीप्रोपाइलिन जो हमारा रॉ मटेरियल है उसमें कलर्स, वेरियस कलर्स ऐड करते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट रहता है उसका डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्ड्स रहते हैं, और वो मोल्ड्स में वो प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं एंड मशीन में वो प्रोडक्ट रेडी होके आता है. फिर उसका डिफरेंट पैकिंग रहता है. जैसा कोई भी प्रोडक्ट है उसका अलग टाइप का पैकिंग रहता है, और वो पैकिंग करके हम लोग जो भी ऑर्डर्स रहते हैं क्लाइंट्स के उसके हिसाब से हम लोग डिलीवर करते हैं. I have this question that am I doing this one kind of business only, or are there any more? So currently I have this one business, but उसमें मैंने मेरे फील्ड्स 3 है अलग अलग. जैसे कि I have my household products जो अलग है, जो हैंगर्स होते हैं, और बाकी प्रोडक्ट्स कटलरी स्टैंड, सोप डिश एंड वैसे प्रोडक्ट्स है. एक फील्ड है मेरा स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जिसमें स्कूल रिलेटेड एंड स्टेशनरी ऑफिस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और एक है मेरा कटलरी प्रोडक्ट्स जो किचन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डिनर सेट हो गया, प्लेट्स हो गया, बाउल्स हो गया, स्पून्स हो गया, वैसे मेरे प्रोडक्ट्स है. सो एक ही बिजनेस है मेरा, प्लास्टिक का ही फील्ड है, बट उसमें भी मेरे 3 अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस है. कि भाई जब मेरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो अलग रेंज में आ जाता है, कटलरी प्रोडक्ट्स अलग रेंज में आ जाता है, और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स अलग रेंज. सो यू कैन से दैट आई हैव दिस वन टाइप ऑफ बिजनेस, बट आई हैव सब फील्ड्स इन इट. के छोटे छोटे अलग 3 टाइप ऑफ बिजनेस उसके अंदर ही आ जाते हैं. Okay, I've got this question that how did I manage for funds? So as I told, from the second year of our engineering, I started teaching. I wanted to build a capital so that I don't have to take much loan from anybody. So I started teaching, and I was successful in that field also. I used to take classes for 11th and 12th, and also for engineering students doing my engineering. So that 3 years, 3.5 years, I prepared myself. I collected certain amount, which helped me, and I took some amount of loan as well. And वो starting phase था, and धीरे धीरे when my products came into the market, I used to manufacture less quantity and used to take payment from them, and then make other quantity. That is how I manage my funds. And धीरे धीरे profit मेरा increase हुआ. मैंने नए products लाए market में, उसके वजह से मेरा profit margin increase हुआ. And then I invested more into this products range, and I created a wide range into the products, and that's how I manage my fund. Okay, I have this question that how you find the demand of product in market and your clients. See, market exposure, as I told in the start of a meeting, that market exposure is the very much necessary thing right now. I used to meet new clients daily. I used to go to the various markets. I have been in all parts of India, and I went to different kind of market, and I had a talk with various clients, and they helped me to understand what kind of products are the need of the hour, and what kind of products where you can give
into the market which sells in a huge amount of quantity, and that's how I got my exposure. एंड उनसे भी मैं आइडिया ले रहा था, मैं खुद का भी थोड़ा बहुत यूज कर रहा था कि कैसे मैं वैसे प्रोडक्ट्स बनाऊं जिसका मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा है, एंड दैट्स हाउ आई प्लान्ड माई सेल्फ एंड दैट्स हाउ आई सक्सीडेड. Yes, I have this question that do I take feedback of my products? Yeah, definitely it is very much important to take feedback of your product, because then only you can realize what kind of quality you are serving into the market and how much expectation it meets. So yeah, definitely take feedback of my products because it is very necessary. Then only if you have a good feedback, if you have a good quality, and if you receive a good kind of feedback for your products, you will definitely sell it more into the market. So feedback is very much necessary. Be it anything, like मेरे ही products नहीं, कोई भी field रहेगा, feedback is very necessary. But the most important thing is you should ask feedback from the right person. Like तुम अपने घर वाले को पूछेंगे ये मेरा प्रोडक्ट कैसा है, तो या तो यू कैन गेट गुड, इवन इफ तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है तो भी घर वाले बोलेंगे नहीं अच्छा है, या किसी वजह से. तो जिनको रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट की, वहां पे आप लेके जाओ, आप अपना प्रोडक्ट पे उनको शो करो, और उनके नजरिए से देखो कि उनका क्या फीडबैक है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, तुम्हारा क्वालिटी उनके एक्सपेक्टेशन को मीट करता है कि नहीं. सो if you have that right kind of people for to show your products and get the right feedback from them, it really helps. I have this question that why did you selected physical product, why didn't selected digital product? It was nothing any I was not thinking much into it, but physical product इसके लिए मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि that market, this plastic market जिसमें मैंने ideas लेने के लिए मैं चाहता था initially, उसमें मुझे इंटरेस्ट आया. It is about basically about interest and your potential. मतलब तुम अपने आप को ये चीज में देख सकते हो कि yes मैं physical products में और मैं marketing में अच्छा हूँ और मैं ऐसी मार्केट को कवर करना चाहता हूँ जिसमें physical products है. तो या फिर if you are good in taking digital products, तो उसमें जाना चाहिए. But for me personally, I found this market interesting. I saw various kind of varieties in different kind of products which I can manufacture and good guide get good amount of profit from it. And इसमें कैसा था मेरी फील्ड में जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया था कि समझो मेरा आज कोई प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे आप घर पे हो तो आप घर पे समझो जो हैंगर्स है, जो कपड़े सुखाने के लिए आप हैंगर यूज करते हो, वो मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ. अभी आज राइट नाउ भी आप हैंगर्स यूज करते हैं ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, और 15 साल 20 साल पहले भी आपके पेरेंट्स भी जब वो भी वो लोग ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे. तो मेरा ये क्या था, मेरा विजन क्या, मेरा थॉट क्या था कि भाई ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो जिनका यूज 15 साल 20 साल से चलता आ रहा है और आगे भी 15 20 साल 25 साल ये प्रोडक्ट्स चलने ही वाले हैं. सो मैंने वो चीज को अप्लाई किया कि भाई ये सब प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा चलने वाले हैं, तो दैट विल हेल्प. सो दैट वाज माय प्लान. So using that taking that thing into consideration, I went for this kind of products because I realized that these have a long term. They are in market for long term, so it helps, really helps. So that is the reason why I chose physical products. Okay, there is this question which is showing due to lockdown, there is a huge loss in business field. So how do you handle your market and your capital for it? See, I would like to say that yes, lockdown में 3 महीने सब बंद था and 3 महीने में सब चल नहीं रहा था due to this lockdown. But after that, there was this huge boost in market because 3 महीने से कुछ भी business नहीं हुआ था and the demand for various products, सिर्फ मैं मेरे बारे में बात करूंगा बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन दैट. हम लोग के मार्केट में इट वाज अ ह्यूज बूम राइट फ्रॉम जुलाई. अगस्त से इतना बूम आ गया मार्केट में कि बिकॉज 3-4 महीने जो डाउन था उसके वजह से सबके पास शॉर्टेज था प्रोडक्ट्स का, एंड धीरे धीरे मार्केट में मेरे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कॉमन पीपल बाय करते हैं, लाइक नॉर्मल पॉपुलेशन, उनको ये सब प्रोडक्ट्स चलते हैं. तो जो घर से नहीं निकल रहे थे वो भी बाहर जा रहे थे एंड दे वर शॉपिंग अननेसेसरी एंड नेसेसरी प्रोडक्ट्स बोथ. सो
इंस्टेड के मेरा लॉस होने के बदले देयर वाज दिस ह्यूज बूम इनटू द मार्केट, विच जो 3 साल के जो लॉसेस है उनको भी उसने कवर अप कर लिया. सो I don't think lockdown or COVID much affected my business. Instead things got very easier right now because मुझे touring करना, जो मैं touring करता हूँ all over India to meet my clients, that got reduced and phone पे सब मेरा काम होना चालू हो गया. Online जो मेरा offline based market है वो धीरे धीरे online थोड़ा बहुत convert होते जा रहा है. So उल्टा मुझे काम करने का easier way मिल गया. So COVID literally helped me to get more progress. Okay, there is this question: how do you handle your emotional breakdown? Okay, there is nothing called as emotional breakdowns in business. There is this thing कि कभी तुम ups में आओगे, कभी downs में आओगे, या definitely business में होता है profit margin और ये सब आप ये कर सकते हैं. देखो, आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए. अगर आपका विजन बराबर है, आपने जो फ्यूचर अपने लिए देखा है उसको ही आप अप्लाई कर रहे हो कि भाई इफ यू आर कंसिस्टेंसी इज द की, इज व्हाट आई रियलाइज. अगर आप अपने फ्यूचर, आपके गोल्स और एम्बिशन के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, डेली आप वही सोच रहे हो कि आपको आगे जाके आगे आप अपने आप को कैसा देख रहे हो, और आप अपने गोल्स और एम्बिशन के लिए अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, उस हिसाब से देख रहे हो, एंड आप उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो, then there is nothing called emotional breakdowns. मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, बट it is like you have to apply yourself. You have to be dynamic in your strategies. You have to be dynamic in your approach. तो आप नए नए प्रोडक्ट्स लेके आओ, नए काइंड ऑफ ऑफर्स लेके आओ, जिससे आप मार्केट को लगा सके, आप अपने हिसाब से उनको वर्क करा सकते हो. तो उस हिसाब से आप अप्स एंड डाउन्स में भी आप अपने आप को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं. I have this question: is my business only limited in India or in many countries? Right now, it is in India itself. India is itself a huge market of 1.5 billion people. So right now, I'm covering various parts of India. Right now, my products are selling into Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, MP, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka. Now I have to capture the east side of the market. So our market is so vast enough कि इसमें ही मैं अभी तक पहुंच रहा हूँ. So later that would be a strategy at how my products I have to sell abroad also. But currently I'm covering various parts of India right now. Okay, I have this question: that any marketing skills that you can suggest, like how to approach and make the client satisfy about your product? See, I would tell you this thing that starting में initially you have to, this thing is very necessary कि अगर आप पहले स्टार्टिंग में वैसे प्रोडक्ट्स लेके आओ जिसमें मार्केट को वो प्रोडक्ट की जरूरत हो. आप कोई भी फील्ड में जाओ, आप ऐसे प्रोडक्ट्स पहले उसको हंट करो जिसमें जो मार्केट उस पर निर्भर हो कि भाई ये चीज ऐसा है कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो चीज पे आप अपना फोकस रखो. वो चीज ऐसा आप क्वालिटी दो और वैसा आप रेट्स दो, एकदम कम से कम वेरी लो मार्जिन पे वो प्रोडक्ट्स को आप लेके आओ. उससे क्या होगा कि आपको मार्केट में घुसना बहुत इजी हो जाएगा. आप इजीली, आपको क्लाइंट बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो आप ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसके उनको बहुत नेसेसिटी है, कि उनके बिना उनका काम नहीं हो रहा है, और आप कम रेट्स दे रहे हो और अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, तो वो दैट हेल्प्स यू. एंड देन आफ्टर द वंस यू हैव got hold into the market, you bring new variety of products जहाँ पे आप ऐसी क्वालिटी दो, लेकिन मार्जिन भी आपका, परसेंटेज ऑफ मार्जिन, आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई रहेगा. लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा कि इन्होंने जो प्रोडक्ट्स ऐसे है, जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, जो मार्केट में मुझे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में मिल रहे थे, लेकिन इसने मुझे 80 रुपीज में दिया है, तो डेफिनेटली ये जो नया प्रोडक्ट लेके आया है वो भी मुझे कम भाव में ही देगा, मुझे कम रेट्स में देगा, और ये भी अच्छा ही प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि इसने अभी तक अपना क्वालिटी मेंटेन किया है. सो दैट इज द स्ट्रेटेजी आई यूज्ड. इनिशियली मैंने भी सब वही प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें मुझे लो मार्जिन मिल रहा था, लेकिन वो मुझे मार्केट में एक्सपोजर दे दिया, मेरा एक होल्ड बना दिया मार्केट में. देन आई ब्रॉट वेरियस सेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरियस न्यू प्रोडक्ट्स, जिसमें मेरा क्वालिटी, परसेंटेज ऑफ मार्जिन हाई था, मेरा प्रॉफिट मार्जिन हाई था,
और फिर वो मुझे जो क्लाइंट्स है उसने वो भी प्रोडक्ट्स वेरी इजीली वेलकम किए बिकॉज उनको ये मेरा एक परसेप्शन हो गया था कि इनके प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी अफोर्डेबल रेट्स. So that is the strategy you can apply. This is a basic strategy you can apply any kind of business according to me. There's this question: what kind of skills are required in this field? So basically, the most important thing skill which is required in my business is marketing. If you have a good marketing hold, if you can sell your products well, if you can show your products to the clients in that way that they get interested into it, if you have that kind of marketing hold, you can definitely succeed because it gets very easy if you have that kind of, if you give good quality. See, product का quality is equally necessary, but फिर भी आपको एक सेल करने का वो स्किल होना चाहिए जिससे आप सक्सीड कर सकते हो. Okay, I have this question that offline में do I supply directly to the market or there is this super stocker? Okay, we have various kind of distributors. Basically, I go to big cities where there are big distributors which supply to the small distributor. Then there are wholesalers and then there are retailers. So my products are only because मुझे भी क्वांटिटी में काम करने का ही मजा आता है ये चीज में. So we sell only to the distributors which cover other small market. Okay. I have this. Okay, what was a proud moment for your parents? Okay. The proud moment is I am doing my business well. I am succeeding and I didn't need anybody's help. And right now, I am lecturing. I am giving this lecture. I am having a session with the students of our college. This is a proud moment for my parents too. And this is a proud moment for me too. And they are very happy that I am succeeding in my business and I didn't need any kind of help. And I created my own path. I created my own vision and I am looking forward to it. And this is a very proud moment for my parents. Okay, my machine setup. I have this question. Where is my machine setup located? So basically, I have two factories right now. One is in Virar and one is in Vasai. Virar is my production unit where I have machinery where my products are manufactured. And Vasai, I have another factory where the packing of my products takes place and dispatch and packing takes place at Vasai. So that's how my company works. Okay, this question is: are you independent business owner? Yes, I am an independent business owner. I am the proprietor of all my companies. Any other questions? How many employees are under you? Okay, so the manufacturing field around I have 10 to 15, 11 machines which manufacture my products, and so I have around 32 people there, and the packing and dispatch factory I have 51 people working under a roof. So basically there are 84 people currently which are employed in my business, and and I have various small agents which work under me, which sell my products also, because I cannot reach every center of our country. So I have appointed various small agents which take my products to different markets, and they are around 10 to 15. So yeah, basically 100 people work under me. Okay, I have this question: how many hours do you have to work in a day? See, business, unlike job, is a 24/7 thing. I do not have any kind of work
working hours or non-working hours. I'm always working. Right now I am at home, but I'm still working. I'm on phones and I'm on conversation with my clients, different clients, and I have to talk to them. I have to handle the machineries because my factory is open 24/7. There is night shift and day shift both, so there are no business timings. There are no working hours. If you have your own business, you have to work 24/7. See, if you want good rich dividends from it, you have to definitely work and give yourself 100%. Business and job में यही फर्क है कि you have a particular limit to job, but business में ऐसा नहीं होता है. You have to apply yourself 24/7 into it. Okay, I have this question. Can I start business in distributor level? Yes, you can definitely start. Depending on what kind of business you have to do, in any level you can start. You can start from retailer or manufacturer or wholesaler or distributor. You can start from anything. It is not like नहीं कर सकते ऐसा. So there is this question: do you dedicate some time for health? Definitely, health is very important. If you are fit enough, you can then only you can apply yourself into business. You have to work. There are truckloads of hours you have to contribute into business. So definitely, health wise, I go for a walk daily in the morning, half an hour, and half an hour I work out and have a considerable amount of nutritious food which is necessary to keep myself energetic throughout the day, because it takes a lot of physical and mental health is required to work in business, because this is just a startup level and it's been 7 years, but definitely it requires a hell lot of time. It drains you physically and mentally, so health is very important. You have to have good kind of health. You have to respect your body so that you can succeed. हेलो सर, इफ यू आर स्टार्टेड योर बिजनेस, आपके मतलब आपके फील्ड में बहुत कॉम्पिटिटर्स भी हो गए, मतलब आप जैसे कंपनी भी हो गए, मतलब प्रोडक्ट बनाने वाले, तो आपने डिफरेंट क्या किया, वो कंपनी से अलग क्या किया? ओके, गुड क्वेश्चन. सी बेसिकली कॉम्पिटिटर्स तो हर फील्ड में है, मेरे फील्ड में भी बहुत है. मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि मैंने पहले वो प्रोडक्ट्स को जीरो डाउन किया कि जो प्रोडक्ट्स को ये जो मेरे जो क्लाइंट बेस है उनको क्या चाहिए और उनको क्या आ रहा है जो एकदम ही हॉट सेलिंग है. मैंने पहले मेरी नजर उस पर रखी और वो सब प्रोडक्ट्स मैंने दिए जो मेरे कंपेटिटर्स से अच्छी क्वालिटी है और कम रेट में मैं दे पा रहा हूँ. अगर मैं पहले वही सब प्रोडक्ट्स पे मैंने फोकस किया एंड वो सब प्रोडक्ट्स जैसे ही मेरे मार्केट में आना चालू हुए तो डेफिनेटली उसमें मुझे प्रोग्रेस मिला और मेरे एक कंपेटिटर से जो मेरे को ये हो रहा था कंपटीशन होता है उसमें भी चेंजेस आ गए, क्योंकि बिकॉज मैंने वैसे ही प्रोडक्ट्स पहले लाए मार्केट में जिसका उनको जरूरत हो और कम रेट्स में, अफोर्डेबल रेट्स में उनके मेरे कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में. तो दैट हेल्प्स. कंपटीशन तो हर चीज में होती है और उसमें वही है कि तुम अपना क्वालिटी नहीं बिगाड़ो, तुम अपना क्वालिटी मेंटेन करो और सामने वाले को वैसा रेट्स दो कि तुम भी कमा रहे हो, तुम भी प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो, बट ऐसा रखो कि उनको अपना जरूरत होना चाहिए. लाइक दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अस एंड नॉट द अदर वे अराउंड. सो पहले वही प्रोडक्ट्स पे मैंने फोकस करता हूँ. मैंने जैसे बताया कि मैं 15 प्रोडक्ट्स मेरे पास सपोज ऐसे है जिसमें मेरा मार्जिन कम है, लेकिन वो ऐसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है कि उनके बिना मेरे क्लाइंट के को मेरे प्रोडक्ट्स के बिना चलेगा नहीं. और फिर मेरे 20 प्रोडक्ट्स ऐसे है जो कम सेलिंग है या मीडियम सेलिंग बोल सकते हैं, लेकिन उसका मार्जिन इतना ज्यादा है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा है कि मैं ये 15 प्रोडक्ट्स लेके जा रहा हूँ तो डेफिनेटली वो क्लाइंट मेरे वो 20 प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट दिखाता है, बिकॉज उसको लगता है कि मैं ऐसे मेरे पास ऐसे ही प्रोडक्ट्स है जिसका क्वालिटी गुड है, बहुत अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी है और उसके रेट्स कम है. सो दैट इज हाउ आई टैकल माई कॉम्पिटिटर्स. Anything else? सर. Yes. सर आपका जो जैसे वसई में डिस्पैच है डिफरेंट एरियाज के लिए, तो वो लॉजिस्टिक जो है लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, वो आपका खुद का है या थर्ड पार्टी से आप टाई अप रखते हो?
वो थर्ड पार्टी से टाइप रखना पड़ता है, बिकॉज मेरे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया वेरियस सिटीज में होते हैं, और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कभी कभी मेरे से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स उनके जो छोटे छोटे सिटीज है वहां पे वो लोग सप्लाई करवाते हैं. सो आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लॉजिस्टिक्स. ये दैट इज बेसिकली वेरी मच थर्ड पार्टी सर्विस, बिकॉज वो भी चीज में अभी, क्योंकि मेरे पास रेंज बहुत है, मतलब जो मैं मार्केट कवर कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा है. So I cannot have that kind of amount of logistics into bringing this, because it would require a great amount of funds which would be invested. हाँ, ये मुझे थोड़ा comparatively महंगा पड़ता है, but फिर मेरे जो funds है वो उधर stagnant नहीं हो जाते. So that is a better option for me. Thank you, sir. Yeah. Anything else? Okay, I have this thing. Can you share your company profile? Okay, what company profile? I didn't get your question well. Hello, Hello. students. If you have any other questions, you can ask the Madhav sir. हेलो सर. Yes. सर मैं पूछ रहा था कि आप सिर्फ इंजेक्शन मोल्डिंग्स का ही प्रोडक्ट बनाते हैं कि ब्लो मोल्डिंग्स का भी? नहीं, मैंने मेरा फोकस अभी फिलहाल इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए ही रखा है. ब्लो मोल्डिंग में ऐसे काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें जो पर्टिकुलर सीजन में ही चलते हैं, एंड वो प्रोडक्ट्स ऐसे है जिसमें देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस नेसेसरी टू कीप अ स्टॉक ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड राइट नाउ मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इट हैज अ लो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, and also they are a very seasonal products, and I want such kind of products. I'm basically interested in such kind of products which sell uh, any time of the year. So my products are basically from injection molding. I'm not much into blow molding right now. तो जैसा मेरे फादर के पास अभी है बिजनेस, तो उसको हाँ. अभी अपने को ग्रो करना था. हाउ शुड What kind of business your father have? मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग. Sorry. मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग. मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब यही अपना प्लास्टिक मोल्ड्स की. यस यस. ओके, सो बस वही है, मार्केट जैसे मार्केट में एक्सपोजर जैसे वेरियस काइंड ऑफ आपके पापा को ये भी मालूम रहेगा कि कौन सी कंपनीज है. उनका कहाँ पे है ये फैक्ट्री? इधर गोरेगांव में. गोरेगांव में. ओके, तो उनको बहुत सी कंपनीज, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स मालूम ही होंगे जो ये चीज में है, प्लास्टिक फील्ड में है. तो बस वही है, मार्केट एक्सपोजर. अपने जो मटेरियल यूज करते हैं आपके फादर, वो जो P20 करके जो मटेरियल आता है वो बेस्ट काइंड ऑफ मटेरियल है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करे. और हाँ, तो वही ध्यान होना चाहिए बस. और उसमें मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, बस आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनीज कवर करनी चाहिए, और आपका जो मार्केट एक्सपोजर है वो ज्यादा होना चाहिए. बस वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए. आपकी फील्ड में कैसा है? सॉरी. इंटरनेशनली भी है मार्केट. इंटरेस्ट. सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली. इंटरनेशनल भी है मार्केट. हाँ, राइट राइट. वही है, क्लाइंट से मिलो, उनको आप भी सजेस्ट, ऐसा है कि आपको मोल्ड बनाना है तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप मार्केट में जा सकते हो और इंक्वायर कर सकते हो कौन से काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. और आपके फादर मोल्ड में ही है तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स लेके उनके जो क्लाइंट्स है उनके पास भी जा सकते हैं कि भाई ये मार्केट में चल रहा है, आप ये बनाइए. अभी तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा कि भाई सामने वाला जो मोल्ड मैन्युफैक्चरर है वो भी इतना इंटरेस्ट लेके बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट्स चल रहे हैं. तो क्या होगा कि सामने वाले को आपका ट्रस्ट बेसिस है ना, वो स्ट्रांग हो जाता है, एंड इट हेल्प्स योर बिजनेस टू ग्रो. भाई सामने वाला भी इंटरेस्टेड है कि उसको तो ये बेचना भी नहीं है, उसको तो खाली मोल्ड बनाना है, लेकिन वो भी इंक्वायरी करके आया है कि मार्केट में ये चल रहा है, ये काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं. तो उनको, सामने वाले को, जो आपके क्लाइंट्स है, उनको भी इंटरेस्ट आएगा, एंड दे विल definitely take interest in to work with your father. Yes sir, thank you sir. Yeah.
मोल्ड कहाँ पर से बनवाते हैं इंजेक्शन? सॉरी, मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाते हैं आप? मेरा मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग वसई में है मेरे पास. अराउंड आई एम एसोसिएटेड विद 6 मोल्ड मेकर्स एंड वहां से ही मैं करवाता हूँ मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करंटली. ओके सर. Hello. If there are no any questions, we can sum up our session. Hello, students. Yes. All right. Thanks a lot, Madhav, for this lovely and inspiring session. Thank you. Thanks Thank a you. lot. Okay, all the students, you are required to fill the feedback form uploaded on the Facebook live session or in the message box here. So kindly, you all are required to fill the feedback form. Okay, sir. I, Rashmi Maheshwari, professor in ECS department. On behalf of Sri Okay. L.R. Tiwari Engineering College, R&D Cell, IIC Council, want to thank our today's eminent speaker, Mr. Madhav Mehta, for enlightening our students by his inspirational journey from student to entrepreneur. Thanks a lot, sir. Your sessions will Thank you so surely much. benefit our student. I again thank you for from our College of Engineering. I would also like to thank our management, our beloved principal Ram Reddy sir, IIC President Mrs. Anju Arya, council members, staff members, and students, and all participants to make this webinar a success. I hope we will have this type of sessions in future also. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you so much. It's been good to interact with people, and I would like to conduct such more sessions if they are helping our students to Surely, sir. think about this business. And I would expect more people to come in next meeting with different kind of questions. This is very good that people are asking good quality of Yes, questions. yes. And The students have are so many Yes. questions. They are taking interest. Yes, Even yes. I thoroughly enjoyed your session. Okay, Thank you, okay. sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, sir. All right, students, we can end the session. Sheetal Okay, ma'am, are thank you you. there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sir. We can stop the session now, ma'am. Yes, yes, yes. Thank you. Okay, Thank sir. you. Thank you, Madhav. Okay, thank you so much. Thank you for having me. Thank you. So everyone can leave the session now. We will have more interesting sessions next coming up list. Thank you.